This conference. Yes, guys. So why do we need something to manage my team and manage my work? It's very easy, right? You do your work, I'll do my work. Finish. Am I right? You do your work, I'll do my work. I've assigned you this job, you do it. Finish work. Why do we need a separate framework for it? Why do we need a separate framework for it? Hmm? Guys, any inputs? Any inputs? Collaboration, less time in discussion, teamwork, more productivity. Hmm. 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 All right. Understood, Prerna. You are right in a lot of ways, right? So, guys, what I'm gonna do here is today's session is all about what is Scrum, why Scrum is important, why do we need Scrum, where did Scrum came from altogether, is there any alternate way, why do we require Scrum, why is Scrum everywhere on internet? There are so many questions, there are so many whys that needs to be understood and answered before you actually get to understand what is Scrum. Right, so before we start and understand what is Scrum, let's discuss today why is Scrum, why not is Scrum, what is my industry demanding, and everything and anything that is required for my industry. Today's session, my dear friend, is all about understanding my software industry. What are the expectations from you, because now you are in final year, and if you really want to jump into the IT industry, what are things you need to be very prepared of, right? Plus you have learned so many things in last 3 years, right? Soft skills, programming skills, your web skills. Now you're learning project management skills and many other technologies. How these all technologies would be used in my industry when you will come. Okay, these are certain things that we will talk. All right, but before that, hi guys, my name is Ajit Vishwakarma. We all have met earlier, I suppose, but that was long back. So I am a data scientist and I'm also a Government of India certified corporate master trainer, and I'm also a lead assessor. Essentially, my job is to train employees of all the big multinational companies where you are going to join recently, right? After this year, you will be joining uh, many of these IT companies. So, what I do here is I go to this industry and I train their employees, I train their management, I train their workforce, I fix their processes, I fix their technology so that they can become more productive, right? I'm also Six Sigma certified. I'm also project management professional. Apart from that, I'm also a Scrum Master Grade 3 certified by Scrum.org SPM, right? So what I do here is I go to many multinational companies like Accenture, IBM, Infosys, Wipro, Microsoft, Google, and I train their employees so that they can conduct or they can become more productive. In general, I'm also called as life and career coach, right? Data scientist, industrial psychologist. I help with behavioral technical trainings. All right, so far, whom I've mentored, almost everybody. More than 200 plus company I've mentored. As of today, I'm mentoring Accenture. As of today, I'm mentoring Ministry of Electronics and IT and Telecommunication. As of today, I am mentoring Barclays. I'm mentoring JP Morgan. I'm mentoring one of the top IT companies, one of the top manufacturing companies, one of the top electronics companies. Godrej and Bayans is somewhere, so I'm training Godrej on fourth for the very same thing for which I'm going to train you. So there is a lot thing that you can learn from today's session, and all of these things are actually industry oriented. If you come to my industry, this is what you will be actually implementing. So please enjoy this session as much as possible. Ask me as many questions as possible, and just clear up all your whys. Why this is there, why this is not there. Let's not stick to the theoretical part. Let's stick to the implementation part for the today. All right. And you can ask me any basic, stupid, or simple, or just curious questions as much as you want. Ask me anything related to industry. I'll help you with. But before that, I want you to tell. I want something to share with you, right? And I want to tell you about my industry requirement, and at the same time why Scrum is so important and why you should learn Scrum. And in order to learn Scrum, what are the basic things, right? But before that, some safety precautions. Okay, please do not attend this session from mobile phones. It is a sincere request.
use your laptop, because we might see some of the hands-on also today. That would be possible, right? Be hydrated, sit in proper position, and I hope you are not traveling anywhere in the rain. It's horrible in Mumbai as of today. All right. Okay. Some simple ground rules that are there for today and all the upcoming sessions, guys. Number one is, uh, if you have traveled in long distance train, right? What do? Suppose you don't have mobile phone, right? It's raining, you cannot look outside, you are not feeling sleepy. What is the last option that you have when you are traveling in a long distance train? Anyone? What is the last option you have? Yeah. Most of the times in Indian Railways, people talk to each other. Am I right? They talk to each other about everything and anything, right? ये बिक गई है सरकार, एजुकेशन सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता. We talk about everything and anything, right? When we are stuck in a journey where you cannot go out, right? So ground rule number one: talk with me as much as possible. Discuss things as much as possible regarding your career, regarding industry, regarding Scrum, or you can also go in and around the topic. Also, there is no problem. Okay, this is my number one. Recently, IPL match went by, right? Did you guys watch IPL match? Chennai Super King again won, right? Yes, guys. So imagine an IPL match where Virat is busy talking to Anushka. He is not interested in playing. There is no umpire. Players are playing catch among themselves. Would you enjoy such type of an IPL match where everybody is busy with their own work? Would you like to watch such kind of an IPL match? Would you like to play such type of an IPL match? I believe not, right? Yeah. So that's our second rule, right? You may turn off your camera and microphone and just be busy with other things. Watch TV, eat Maggie, do other assignments, watch YouTube videos while attending the session. But then what will happen here? It will become very boring for you, right? Not only it will become boring for you, it will become very boring for me also, right? I don't know about you, but don't bore me. So talk to me as much as possible, interact with me as much as possible. One of the simple requests that I would do here is just say yes or no when I ask you certain questions, right? So that I know that we are connected together. Yes, guys. Yeah. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so. Thank you so much. Thank you so much. Right. हाँ. एक एक्नॉलेजमेंट कर देना यार, ठीक है कि तुम हो जुड़े हो हमारे साथ, ठीक है. उतना तो मिनिमम बनता ही बनता है, क्योंकि आज हम मिल रहे हैं और भी मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे. ओके, चलो डन. We'll get started with my today's session with the introduction of how to work with Scrum and related technologies. Okay, all right. Okay, so first thing that we will discuss here is my industry. Do you know the concept of industry? We are in industry number. Which industry we are into? Do you know we are in industry 4? Do you know the concept of industry 4, guys? Yes, no. Yes, no. Do you know the concept of industry 4? No, sir. No? Okay. So I'll tell you. Okay. And then we will slowly move on. I'm so sorry. The session will start little slow, but it will very quickly pick up the pace. So bear with me. So we are right now in industry 4. Okay. So basically, what are you doing here? You are preparing for the industry, correct? You have to come to the industry and you have to work for the industry. And for that, you have done your 12 years of schooling and then now 3 years of graduation, right? Ultimately, what is the end goal? To come to industry and start working. Am I right? Am I right, guys? Yeah, that's the objective. Am I right? Hmm? Acknowledgement. Yes, This is, yes, yeah. sir. Thank you. बस थैंक यू, इतना ही कर लो बस. हाँ या ना बोल दो, ठीक है. तो सेशन में थोड़ा सा एनर्जी फ्लो होती रहेगी. So let me talk about my industry 4, and then we will get into Scrum and other technologies. Scrum क्यों आया है? The core reason you do not know, I'll discuss it. So somewhere around 1700 BC, right? Roughly 300 400 years back, 1700 BC, my first industry started, and this first industry spoke about simple machines, simple machines like uh, pen,
Simple machines like Caesar, these all are simple machines, right? So why did we require simple machines? We required simple machines so that we can save some time, correct? We can save some time, and we can save some money, and we can do quality work. Am I right? This was simple objective. Before that also we were able to do work. But with simple machines, what was happened was we are able to save time, because of which we were ultimately able to save some money also. And we were able to do more quality work. Right? Very simple as cutting clothes, as simple as that. Needle, right? Very simple examples. Now this went on till 100 years. Then we got into my industry two, somewhere around 1800, 1800. Now my industry two spoke about factories. Then we realized the potentials of machine. Right? We realized, okay, machines are amazing, great. Let's build factories, mass production, big factories, right? And this is where some creators came to India. दोगुना लगान देना पड़ेगा, right? तुम इंडियंस लोग सिंपल सिंपल मशीन्स यूज करते हैं, हम तुम्हारे यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएंगे, कोल प्रोडक्शन करेंगे, रोड्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसके बदले तुम हमको लगान देंगे, राइट? फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए आई थी ना. Why else did East India Company came into India? 1800 BC was all about setting up factories, right? Setting up factories. Again, why we required factories? A simple person would manufacture a cloth, 100 clothes a month. Because of factory, I could manufacture 100 clothes every day. So less time, less cost, and more quality. Do you agree? Do you agree? That's why factory was there, no? Why else would we require factories otherwise? Yeah? Yes or no, guys? Mhm. Yeah. Thereafter came my industry three. My industry came in 1900 BC, where we started using where we started using computers. Right? We need computers. Again, what was the objective? More faster work, more quality work, because of the use of computers, right? Automations. We were able to do more better work, more accurate work in less time and less cost. Right? That's what happened in 1900 BC. Again, this went on till 100 years. Then came the era of 2010 to 2000, right now 2020. We are in something called as Industry 4. Right? We are in something called as Industry 4. Now in Industry 4, we want more quality, we want lesser and lesser time, we want lesser and lesser cost. Right? It's all about smart work, smart technologies. So you will see a lot of data, a lot of automation tools, a lot of AI being used, a lot of machine learning being used. All of these things have come into picture, right? So right now you are preparing for Industry 4. All right, let's do a very small case study and try to understand what my Industry 4 wants. We are right now in Industry 4. Is that clear? Which industry we are into? Industry 4. Industry 4 talks about. Okay. Now, why Industry 4? Yeah, Industry 4. This is my Industry 4, guys. Understand. And most of the time, what happens is things that you are learning on internet, etc., is from a previous industry. Okay, so you have to be updated with the industry. Industry 4. Now, what is the demand of my Industry 4? Let's discuss this. Number one, my Industry 4 wants you to be an expert, right? My Industry 4 wants you to be an expert. Okay, that's why we are seeing a lot of skill development. Number two, my industry does not have a lot of time, right? In my industry two and three, Reliance, Tata, all these companies were there. How many years does it took for Reliance to become Reliance? Any idea? Tata to become Tata, how many years did it took? 5 years? 10 years?
20 for Reliance to become Reliance, Tata to become Tata. How many years it took, guys? 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, 20 years, 30 years, 40 years, or more than that. Yeah, A decade maybe. it took them a good 80 years. Yeah, it took them a good 80 years. Right? Their third generation is right now working. Right? Flipkart to become Flipkart. How many years it took? Ola to become Ola. How many years it took? How many years it took Flipkart to become Flipkart, Ola to become Ola? It hardly took 5 years. Yeah, it hardly took 5 years. Industry 2, 80 years it took. Those companies who were in industry 2 to become a big giant, it took them 80 years. Right? In my industry 4, whichever industry is there in my industry 4, it takes just 5 years. In 5 years, a small startup company becomes a big giant like TCS, right? A big giant like Reliance in 5 years. That's it, right? After 5 years, it naturally either dies or they change their strategy to survive. Two things happens. Either that company will die. Okay. So we see a lot of companies who had a lot of money and have died. And you must be hearing a lot of news of a lot of companies which are now dying, struggling to sustain. And have you heard news? This company, this very popular company is, you know, now we see the Byju's is about to shut down. Right, one time it was one of the richest companies. Correct? Have you guys PW? You guys have heard of PW? Yes, sir. PW, PW, PW is now how many crores? 8,000 crores. Yeah, physics wala is now 8,000 crores. Right? Started in last 5 years. So industry 4, every company starts from zero and in 5 years it dies. Either it dies or they change their strategy and they survive. Okay. So does my industry have time? My industry do not have time. If you see Flipkart, Amazon, or any uh, big multinational company, after every 3 months, you see there are major updates in the app. Have you seen it? Major update in the strategy. New things are coming at a very fast rate. Have you seen WhatsApp giving you updates so frequently now? Have you guys observed? Yes. Yes, yes. Yes. So they are trying to sustain. They are making changes. Why would WhatsApp need to update themselves? Zoom, WhatsApp. Why do they need to update themselves so frequently? Because if they don't, they will not survive. So my industry is changing every 3 months. That's the reality, guys. And my industry wants expert. See, my industry does not have key. I will hire you, then I'll train you for 3 years, and then maybe you will do some work. By the time I will train you, you will be ready to do some work. My industry will already die. I want candidate who is pre-trained and can start working on day one. Okay, there are a lot of many resources available now to get yourself trained. So my industry expect you to be trained. So I want expert, already trained. We don't want experienced people. Why do we want? Why we don't want experienced people? Why we don't want experienced people? I'll come back to Scrum. Don't worry. You must be wondering where are we going? Yeah, we are going to Scrum. Why do we don't want experienced people, guys? We want trained people. We don't want experienced people. Why? Experience takes time, and we don't have time, right? So I did my post graduation from VGTI college. I was state rank holder. All right, I was one of the best. I was the youngest chief technology officer. I was one of the youngest project manager in the history of Infosys. But 10 years back, whatever technologies I was expert of, whatever things I was trained for,
right? I was rank holder university. Those things does not exist now, right? Those things does not exist now. Now it's completely different scenario. So you can say I'm highly experienced, rank holder, highly experienced, irrelevant. We want you to be trained for the latest things. Even if you do not have experience, it's fine. Be trained. Okay. So less time, highly trained, and expert. And my industry is forever changing. Okay. So what I want better and better quality of work. अभी है ना डिलीवरी मुझे 2 दिन में नहीं चाहिए, मुझे 10 मिनट में चाहिए भाई डिलीवरी, और क्वालिटी चाहिए मेरे को, करेक्ट? अब सिर्फ फोन पे बात नहीं करना है, वीडियो कॉल भी होना है, रिकॉर्डिंग भी होनी है, और हजार चीजें साथ में होनी है, ठीक है? मोर एंड मोर क्वालिटी इज रिक्वायर्ड. टाइम, डू आई हैव टाइम? आई डोंट हैव टाइम. डू आई हैव मनी? स्टार्टअप्स देखो गैराज में स्टार्ट हो रहा है, कंपनीज कम पैसे में दे आर स्टार्टिंग एंड शूटिंग अप, लेस कॉस्ट, राइट? Along with that, we do not want 1,000 employees, 2,000 employees. We want a very small team. We want a very small team, a small team of expert people. We want, right? Right. Also, my industry is changing every 3 months, so I should be able to adapt to change, right? Adapt to change, which is the which is one of the biggest formulas ever discovered, ever discovered. Biggest formula ever discovered, guys. You know which is one of the best formula based on which the universe is actually working? Yeah, have you guys heard in science there is a formula based on which everything is working? One of the famous scientists have given that very small formula is there. You know the formula of the universe on which everything works. Anyone, anyone. Biggest formula ever discovered, given by a very famous scientist. You know, based on which a lot of things are working. The universe is working on that same formula. E is equals to mc square. Have you guys heard of E is equal to mc square? Yeah, E is equals to mc square, right? Everything is working around that formula. Yeah. Oh, wonderful. Yes, yes, you are right. Time is equals to money. Okay. Yeah, that formula is also important. Time is equals to money, but E is equals to mc square is the real E. It changed everything. So one of the great physicists gave this formula E is equals to mc square. Now there is another formula that have come up, which is given by one of the greatest data scientists, who has to be, luckily is an Indian, which is a very proud thing. And the formula that is given by this one of the most renowned data scientists of India, based on which this entire industry is working as of today, is Q is equals to TC square. Q means quality. My industry wants quality, whether it is software. So let me connect it to the software industry. So when it comes to software industry or IT industry, I want quality tool. I want quality software. I just don't want software. I want high performance software, right? And I want you to develop in less time. And I want to develop you with a very low budget or very optimized cost, right? And the team size who will be developing and operating this is going to be very less. Okay. And this software should adapt to changes. Right? This software should adapt to changes. Q is equals to TC squared, an amazing formula based on this. Our entire industry is working. It is so proud to know that it has been it has been built up by one of the Indian scientists. Okay, now let's do a quick study. Let's do a quick case study here, guys. Okay, I just want you to, yeah, I just want you to use your common sense and let me know. Yeah.
sir. All right. Yes, yes. What was your question? Can you repeat it? So I did not ask the question yet, but I'll ask now and use your common sense and let me know. Q is equals to TC square is what my industry wants today. My IT industry, my software industry for which you are preparing, there is one simple expectation of my industry, my dear friends. अगर ये बात आप समझ गए अभी जो स्क्रीन के ऊपर है आप इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाओगे and I'm helping you to understand on a longer run as an IT expert what all skill sets you should have and how Scrum is one of the most important thing which I believe every and each one of you should be an expert of. Suppose, right? I give you very less time to do some work. So will it degrade my quality or increase or make my quality better? Common sense question, guys. If I give you very less time to do a certain work, will it degrade? Yeah, it will degrade the quality, right? Okay. If Yes. I don't give you enough, if I don't give you enough budget to work on a project, right? I want you to make a car, but then I will give you scrap material. So will you be able to make a good quality car or will it be a very substandard quality car? Substandard, right? Yeah. Can I have some feedback, guys, please? Okay. Now, apart from that, I want you to build complex systems. I want you to build complex technology. And I will tell, okay, four of you, okay, you make a team and you work on it. And I'll tell you, okay, four of you, only you four will work. Complex system. So will you be in less people are there? So will you be able to guarantee quality work? Four people, complex system. Will you be able to guarantee a quality work? Four people, complex system. Will it not be challenging and difficult? Yeah, you will not be. Time and work, guys. Time and work. If there is less number of people, will you have more time or less time? If less number of people are there to complete the task, will you take more time? Yeah, so yeah, Mr. It is here Shai is saying depends on type of work, right? But in generally, if you talk about it, in generally, guys, let's just talk any work. You know, see if you have to empty a truck of books, okay, and I'll tell okay, only one person has to empty it, right? So obviously you will get tired after some time, and then you will start just throwing books, right? Yeah, that will happen naturally, correct? If less number of people are there, it will take more time. But my industry is saying I will not give you time. Suppose I'm painting this home. Okay. I started painting it blue. I started painting it blue. Suddenly, somebody said, nice sir. अच्छा नहीं लग रहा. Let's make it green. ठीक है. Let's make it green. Halfway down the line, somebody said, sir अच्छा तो है sir, but वो feel नहीं आ रहा है sir. Why don't we make it, ivory white, right? So if I keep changing on a very important project, will I take less time or more time if there is a lot of change? Will I take less time or more time? If I'm more time, thank you, Sachin. Let the feedback keep rolling, guys. Okay. So if I keep changing something and I'm taking more time, will my cost increase or decrease? Will my cost increase or decrease? If I'm changing things again and again and it's taking more and more time, will the cost of the project decrease or will it increase? Increase. It will increase, right? It will increase. Will it degrade the quality? It will degrade the quality. Guys,
if you use common sense, if you just see the way it is, don't you think so? Q is equals to TC square is an impossible thing to achieve if you just go by common sense. Don't you think this is an illegal request by the industry? Sir, Don't you think industry? Yes, it should be 1 upon TC yes. square, right? Mm, okay, you can say so. You can say so. Okay, you can say so. Right, 1 upon TC square, mathematically speaking. But here we are trying to say if you want quality, you need less time plus less cost, less team, and it should adapt to more and more changes. Okay, this is what is required. Okay, this is not mathematical. However, we are trying to put it in mathematical. I'll definitely give this recommendation to the data scientists who have formed this formula. Thank you so much. It has got Q, quality, time, cost, change, and T. Very illegal request. यार या तो टाइम दे दो, तुम बोल रहे हो टाइम भी नहीं देंगे, पैसे दे दो, तुम बोल रहे हो पैसे तो बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कम टाइम में काम करना है ना, अच्छा काम करना है ना, अरे दो चार लोग एक्स्ट्रा दे दो, काम कर लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, दो चार लोग एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ऐसा ठीक है यार, हम लोग कर लेंगे कैसे भी काम, ठीक है, इतने साल से करते हैं, कर लेंगे, आगे भी कर लेंगे। कम कम लोगों में, हम कम टाइम में और कम कॉस्ट में, बिकॉज वी आर इंडियंस, राइट, वी आर गुड एट जुगाड़, कर लेंगे। लेकिन बार बार चेंज करने मत बोलो, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा यार। इसका कोई जुगाड़ नहीं है इसका जुगाड़। तुम काम कर रहे हो, बहुत मेहनती हो, सुनो फिर से सुनो, तुम काम कर रहे हो, बहुत मेहनती हो, तुम दिल लगा के काम कर रहे हो, तुम एक्सपर्ट हो, तो तुमने फटाफट फटाफट चीजें बनानी शुरू कर दी। तुमने आधा काम किया, मैंने बोला चेंज करो, इसको नहीं चाहिए। इसका कोई बैकअप है तुम्हारे पास? डू यू हैव एन आंसर फॉर दिस रिक्वेस्ट? halfway down the line I will ask you to change things, फिर I'll ask again, then ask again, then ask again. Do you guys have an answer to change request? तो मुझे बोले ऐसे नहीं चलेगा। मैं बोला यार इंडस्ट्री बदल रही है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? Do you have guys answer? Can you logically, you're all intelligent guys, right? Can you discuss with me right now? Can you argue with me right now? Can you use your common sense and tell me कि ये इंडस्ट्री का ये चेंज वाले रिक्वेस्ट का कोई जवाब है क्या किसी के पास? क्या करें? डोंट यू थिंक सो इट्स एन इलीगल रिक्वेस्ट? ये थोड़ी जाती हो गई, ये बिक गई है इंडस्ट्री, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नाम पे, हाँ, हमारी जान ले रहे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर गाइस, दिस इज व्हाट माय इंडस्ट्री वांट्स, एंड नॉट फ्रॉम टुडे। ऐसा नहीं है अभी चाहिए, जब से इंडस्ट्री आई है तब से यही चाहिए इंडस्ट्री को। क्वालिटी चाहिए, कम टाइम कम पैसा, दैट्स व्हाट माय इंडस्ट्री वांट्स, राइट? एनीवन, एनी थॉट्स, एनीवन, एनी थॉट्स, हाउ टू satisfy this illegal request of my industry? और सारी इंडस्ट्री को यही चाहिए, there is no alternate. I want complex softwares, complex bridges, complex hardwares, right? So आपके केस में complex software चाहिए हमें, this is applicable to everyone, right? Time I will not give you, budget I will not give you, team size would be only this much, right? And changes तो आएंगे, तुम कुछ भी बोल लो। Prerna is saying monthly and weekly updates, तो उससे टाइम ज्यादा लगेगा ना प्रेरणा? डोंट यू थिंक विल टेक मोर टाइम? बार बार अपडेट करते रहो, टाइम लगेगा ना, और लोग भी ज्यादा चाहिए होंगे ना। यस, दिस सीम्स इम्पॉसिबल गाइस, आप कोई भी लॉजिक लगा लो, ये इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है, इलीगल लग रहा है। इम्पॉसिबल मतलब ये, मतलब इसको अचीव करने में
घर बिक जाएगा तुम्हारा, राइट? ये अचीव करने में जान निकल जाएगी भाई। तुम बोल रहे हो कि जिंदगी भर ऐसे ही काम करना है, कैसे? सपोज मैं आज 500 ईयर्स 300 ईयर्स पहले बोलता कि सुनो, एक बहुत बड़ा ऐसे मेटल है, 200 टन का मेटल है, मैं अगर स्टोन पानी में डालूंगा तो ये डूब जाएगा, बट ये 200 टन का मेटल है, ये मैं पानी में डालूंगा तो ये नहीं डूबेगा। तो तुम बोलते हैं इम्पॉसिबल है, कुछ भी मत बोल, बोलते तुम 500 साल पहले। आज नहीं, आज तो तुम बोलोगे कि ऑफ कोर्स 500 बिफोर। अब बोलते क्या बोल रहा है, इम्पॉसिबल है, कुछ भी मत बोल। पत्थर तो रहता नहीं है पानी में, तू बोल रहा है मैं 200 टन का आयरन लोहा डालूंगा तो वो फ्लोट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। बोलते या नहीं बोलते? यस। हाँ यार, फीडबैक दे दो यार। यस, यस और नो बोलते ना। हाँ यार, हाँ Yes, या ना sir. बोलो यार, हाँ या ना बोल दो, स्मॉल रिक्वेस्ट गाइस, गिव मी फीडबैक यार। ओके, ऑलराइट। मैं बोलता यार, सुनो, बहुत बड़ा मेटल का ऐसा पीस है, ये हवा में उड़ेगा, और उड़ेगा तो उड़ेगा, इसमें तुम लोग बैठा के उड़ा सकते हो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। ठीक है? हाँ, तो 500 साल पहले क्या बोलते हैं ब्रो? क्या क्या तू क्या है ब्रो? कुछ भी मत बोल, इट इज इम्पॉसिबल, हम कैसे उड़ेंगे? नाउ these two things were made possible. How were these two things which initially looked impossible and illegal? ये illegal नहीं है भाई, इंसान आसमान में उड़ रहा है, इलीगल नहीं है, इलीगल ही है ना। इलीगल है, इम्पॉसिबल है, राइट? इलीगल है, इम्पॉसिबल है, but this illegal thing was made successful, this impossible thing was made possible, and it was made by using certain scientific laws and principles. एक दिन एक आदमी आया, बोला सुन भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता है? ब्रो ब्रो वो क्या होता है ब्रो? अरे बहुत सिंपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई भी आइटम को, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालोगे ना, अगर वो ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट शेप, अगर वो उतना पानी डिस्प्लेस कर पाता है जितना उसका खुद का वेट है, तो वो फ्लोट करेगा ब्रो। क्या बात कर रहा है ब्रो? तुझे कैसे पता चला? ब्रो ऐसे ही एक बार ऐसे पत्थर फेंक रहा था, ठीक है, पत्थर फेंकते फेंकते वो सामने कुछ ऐसे ऐसा ऑब्जेक्ट था, वो फेंका, वो फ्लोट हो गया ब्रो। तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया, एंड देन आई स्टडीड इट, एंड देन आई मेड अ लॉ आउट ऑफ इट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सेम वे एरोप्लेन, राइट? एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल है। इफ यू सी विंग्स ऑफ एरोप्लेन, नीचे फ्लैट रहता है, ऊपर कर्व रहता है। जो नीचे एयर जल्दी जाती है, लेस डिस्टेंस टू ट्रैवल, ऊपर ऐसे कर्व रहता है, सो इट टेक्स मोर टाइम फॉर द एयर टू ट्रैवल। इससे क्या होता है? हाँ, इससे ये होता है कि नीचे से प्रेशर क्रिएट होता है अपवर्ड, so anything which has this structure will automatically experience an upward force। तो बोलता है ब्रो, इधर से सामने से फिर हवा कैसे आएगी? इधर दो मोटर लगा के भगा देते। That's how airplane works. That's how ships works. By using certain scientific laws and scientific principles, we can make impossible things possible, right? Similarly, in my software industry, in my IT industry, there are certain scientific laws and principles which are laid down and perfected and studied. How they were made, how it came into picture? By observing, by observing how industry is working, by doing a lot of research work to it, contribution through various academicians, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉर्पोरेट्स, इन सब लोगों ने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर, और रिसर्च करने के बाद ये साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशंस बने। ओके, तो व्हाट इज योर जॉब माय डियर फ्रेंड? योर जॉब इज नंबर वन, नंबर वन, राइट?
This scientific laws, principles are written in a subject called as software engineering. अकॉर्डिंग टू मी ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोई भी फील्ड हो, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉक्स अबाउट ओनली वन थिंग एंड वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, राइट? हाउ टू बिल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट. Now product could be anything, it could be a software also, it could be a nice water bottle like this also, or it could be a business or a process, right? Or a process. Okay. Yeah. Yes, Pi, you can come back, no problem. I'm recording this session in case somebody has missed it. आप आ जाओ guys, यहाँ से हमारा session is going on to a very exciting mode. Don't miss this. I can bet no YouTube video, no amount of internet content will tell you this industry things. So पता ही नहीं है दोस्त. Exclusively I can bet on for like some X amount of money. What I'm sharing you here is very exclusive. ये वही बता सकता है जो इंडस्ट्री में प्रोसेस या लीडरशिप लेवल पे बहुत ज्यादा टाइम पे काम कर चुके हैं, which is what my job is. My job is to identify problem in the industry and fix it. How do I fix it? Either I fix their technology or I fix their process or I fix their employees. Fix करते हैं हम problem. कंपनी स्केल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? We identify and fix it. Okay, कंपनी लॉस में जा रही है, we identify and fix it. Right? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके दूसरे भी नाम है, एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodology, right? Another name of advanced software development methodology. Using this particular domain talks about all the scientific laws and principle using which one, number one, you can build softwares, quality softwares in less time, less cost, less team numbers, and with a lot of changes. How? Which we'll talk. It can also fix your process. आप इससे बिजनेस भी रन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी यूज कर सकते हो. इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर. In fact, if you truly understand this, you can use it in your life also to manage yourself. ये इतना फाउंडेशन लेवल पे है ना. It talks about human psychology. It's talk about हम कैसे बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, कोई भी चीज को कैसे प्लान किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है. See, software have become so complex. Without proper planning, without proper analysis, without proper scientific use of laws, you cannot execute it and make it to a certain quality level, right? Don't you see things have become so complex that sometimes it seems very difficult. यार हम कहाँ आ गए, है ना? चैट जीपीटी, isn't it? लग रहा है, नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत? अभी वो ऑटोमेटिकली चालान ऑटोमेटिकली करता है फ्रॉम द कैमरास, right? Do you know that happens now in Mumbai? In Mumbai, now the challan they will send you directly WhatsApp. No traffic inspector is there, right? Yeah, things have become very complex, right? And my dear friends, it is possible because of my advanced software development methodology, the science that deals with laws and principles for developing projects, softwares, complex process, or even business. You can use the same concept at all the levels, right? Yeah, yeah. NPCI improved the way of, yeah, yes, right? The way we are, the tag, smart tag, right? Car pay, you have this tags also, right? Everything has become now. It's an age of smart computers, guys. My industry 4. It's an age of smart computers. It's an age of AI, ML. We, as a developer, are supposed to make complex systems, right? And without understanding this book of law, you cannot proceed in my industry. Right? You cannot proceed in my industry.
You can definitely get a job, but you will not scale up to a leadership level. आपको जॉब मिल जाएगी भाई, लेकिन आप सोचोगे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊं, मैं टीम लीडर बन जाऊं, मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन जाऊं, वो नहीं हो पाएगा दोस्त, वो नहीं हो पाएगा। सो ये सब्जेक्ट अभी हम समझ लेंगे, और ये सब्जेक्ट बहुत गिने चुने लोगों को पता रहता है, जो एक कंपनी के सीटीओज होते हैं, right, who understand the technology at a very core level, who had learned all of these things over a period of time। तो 10-12 टॉप कंपनीज में लीडरशिप के साथ, टॉप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, टॉप इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गए, टॉप मेंटोर्स के साथ बैठे हैं, उन्हें इन चीज़ का क्लियरेंस रहता है। बाकी सारी दुनिया तो बस गेस कर रही है क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। सो वी आर हियर गाइस to help you understand these things. So are you guys ready to learn these things? क्या आप सीखना चाहते हो ये सारी चीजें? हम्म? कोई सा भी जॉब डिस्क्रिप्शन आज आप जाना, राइट, आई एम बीएससी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, तो जॉब डिस्क्रिप्शन डाउनलोड मान लेना रैंडमली, ऐसे गूगल पे टप करके। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आने चाहिए, अजाइल आना चाहिए, स्क्रम आना चाहिए, ये 4 to 5 डिफरेंट थिंग्स मेंशन रहेगा, चेक कर लो चाहिए तो, राइट। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर इज, बुक में रहता है आपके पास, बट दैट इज थियोरेटिकल, am I right? And when I asked you a lot of questions also, the questions were more like textbook answers, which will not work in industry. इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कैसा करना है वो पता रहना चाहिए, isn't it? इम्प्लीमेंट कैसा करना है वो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज which has been given to you at your university is important. Along with the knowledge that you have, the skill sets are very important, right? That means the practical aspect, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए दोस्त, ठीक है। बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है, बिना बुक पढ़े कहाँ चले जाओगे, ओके। बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। along with that you should have skill sets, so you have, so knowledge का ऐसा होता है कि मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। देखो नॉलेज कभी खत्म होती है क्या, सुना होगा ना, there is no end to knowledge, knowledge is like an ocean, ever ending, correct? am I right guys? नॉलेज का कोई वो नहीं है यार, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, पीएचडी के बाद फेलोशिप, अरे कहानी लंबी चलती है, ठीक है। मुझसे पूछो, राइट, मुझसे पूछो, यू नो आई गॉट 400 plus certifications, right? I've done degree thrice in my life, in college thrice, अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, नॉलेज का कोई एंड नहीं। तो वी एक्सपेक्ट यू टू हैव रिक्वायर्ड नॉलेज, मिनिमम सेट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, स्किल में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, स्किल का सिंपल रूल इज देयर, समझ जाओ ये बात, समझ गए तो निकल जाओगे, नहीं तो फंसे रहोगे। आई वांट मैक्सिमम स्किल्स, आई वांट मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक मिनिमम लेवल तक चाहिए। मिनिमम लेवल मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत चीजें, एक स्टैंडर्ड लेवल तक चाहिए नॉलेज, राइट। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल माय साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल, पता रहना चाहिए। एंड देन आई नीड स्किल्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इम्प्लीमेंट करने बोलूंगा कर सकते हो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने बोलूंगा कर सकते हो, कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो मुझे देखना है, ठीक है। तो मैं टीम बिल्डिंग है तो आओ मेरी कंपनी में टीम रन करके दिखाओ, राइट, दैट्स व्हाट इज माय इंडस्ट्री, दैट इज रिक्वायर्ड। सो वील टॉक अबाउट स्किल पार्ट, अभी हम स्किल पार्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, it will get a little exciting and we'll do a lot of hands on also, but today I want to set the objective of क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। Two things my dear friends are very important for you, if you have exposure तो मिल गया होगा, but you would not know the practical aspect of it. Two things, two scientific laws are very important and I'll help you understand industry में how these two things are implemented. Number one is SDLC, नाम तो सुना ही होगा, yes, SDLC नाम तो सुना ही होगा, है नहीं है? बोल
दो यार Yes, कुछ. sir. हाय राव. थैंक यू. हाय राव बोलो, फीडबैक दे दो. क्या है ना, ऑनलाइन है ना, समझा करो. दिखाई दे नहीं रहे हो तुम, है ना, सिर्फ नाम दिखाई दे रहा है. आजकल एआई बहुत चल रहा है. तो एटलीस्ट इफ यू से यस सर, नो सर, तो आई विल अंडरस्टैंड कि जनता इज देयर विद मी and you are able to understand. Or am I going too fast? Is it okay? Is the speed of the session okay? Is the speed of the session okay? Yeah. Are you able to understand what is the industry? See, first I want you to understand what is my industry requirement. ठीक है, आंख बंद करके टूल टेक्नोलॉजी मत पढ़ो, पहले समझ तो लो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, फिर बैठ के पढ़ो ना, फिर सही है ना. राइट. So this is my industry 4. Up till now, what we have learned number one, we are into industry 4. Okay, industry 1 say we have transited to industry 4. Industry 4 talks about, yeah, a lot of smart computers, AI enabled things, MI enabled things. When I say smart things, means industry 1 complex software now. Okay, we don't want simple software, log in, register, log out. नहीं चाहिए दोस्त. अभी अपने को कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चाहिए, एकदम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर. तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तुम्हारा लॉगिन अपने आप रजिस्टर हो जाना चाहिए, तुम कौन हो, कहाँ से हो, वो अपने आप कलेक्ट करके समझ आना चाहिए. ठीक है, तुम्हारा डेटा सब एनालाइज करना चाहिए, खुद ही बताना चाहिए कि ये तुमको प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है. सॉफ्टवेयर शुड टेल मी व्हाट आई वांट. I will not go and search what I want. That means I want complex softwares. This is my industry requirement. Does my industry have time? No, sir and madam, my industry do not have time. We want you to be pre-trained. बहुत सिंपल है, clear है. ठीक है. I want you to be pre-trained. Secondly, my industry is working on Q is equals to TC square. Okay. One of your friend recommended, sir, इसको I by TC square होना चाहिए. I'll see into the formula. I'll give the recommend. I will not say I'll give the recommendation to the India's one of the most reputed data scientists who have formulated this formula based on which this industry is working. मैं उनको बताऊंगा. But quality है, time कम चाहिए, cost चाहिए, team कम चाहिए, and changes forever होंगे. Change को accommodate करना चाहिए. This is an illegal request. For this, we require two scientific principles. Number one is SDLC, and my number two principle is Scrum. ठीक है, हमें ये दो चीजें चाहिए. हमें ये दो चीजें चाहिए. So my question to you: are you guys an expert of SDLC? Are you guys an expert of Scrum by now? Yes or no? Simple question. Are you guys an expert of SDLC? Are you guys an expert of Scrum? Yes or no? बोल रहे हैं हो या नहीं हो? Are you guys an expert in SDLC? If I give you a project, can you implement SDLC? If I give you a team, can you implement Scrum, Agile? Are you an expert of SDLC and Scrum by now? Yes or no? Yeah, yes or no, guys? And हो तो बोल दो, नहीं हो तो मत बोलो. नहीं हो. Yes, guys, come on. A quick feedback. क्या आप SDLC or Scrum expert हो by now? Yes or no? Okay, then media say we'll be working on it. Okay, you should be an expert by now, and industry will not train you for these things. Okay, we expect you to be trained and come, because now why why industry is not training you anymore, because now you have so many options to get trained. Okay, you have got so many options to get trained. That's why industry is saying you know you get trained and you come. I will not train you.
Plus my industry does not have time to train you, then help you, then you will start working. My industry does not have that time. Okay. So this, and there are few more sessions that are coming up, and this session would be simply based on where I'll train you for these two things, right? Mhm. So there will be some more training session coming up where I will train you for these two things: how to implement Scrum, Agile, SDLC all together. Scrum, Agile, SDLC एक ही है. You know, Scrum Agile is a SDLC model. Do you know this? SDLC का एक टाइप है Scrum. पता है क्या ये बात? नहीं पता है. ओके. हाँ, SDLC का टाइप है कि SDLC के बहुत सारे मॉडल्स हैं. जैसे कार के मॉडल्स होते हैं ना, जैसे कार के मॉडल्स होते हैं, करेक्ट? एक कार है तो BMW, Nano, this that, different types of models are there. Every model has got its own benefit. वैसे SDLC के बहुत सारे मॉडल्स हैं. Every model has got its own benefit. Out of those models, एक गाड़ी होती है जो बहुत पॉपुलर हो जाती है ना, जैसे वो थार. थार पॉपुलर है ना बहुत, है ना? एक मॉडल से थार एक पॉपुलर हो जाती है बहुत ज्यादा. तो आज के तारीख में स्क्रम पॉपुलर. So let me help you understand this two things very quickly. This is part one introduction of the session. We will take more and more session if you want. So I want to ask that thing right now. So are you guys interested to do this workshop? Not now. आज तो हम introduction कर रहे हैं. Are you guys interested to learn SDLC and Scrum, how we implement it in industry? We'll do a lot of case studies, right? And we might even give you live projects to work on. ठीक है? Based on how much you are showing interest, how committed you are, how dedicated you are, I will give you case studies. I will train you from complete zero. I will also tell you how big giants are using it. I might secretly share some documents also. Okay, just for your reference. Okay, if you promise to just keep it to yourself, right? And we will also give you case studies. And some of you who are interacting nicely, who are responding nicely, who are regular, who are disciplined, and who over this period of time become my good friend, will also receive internship and live project opportunity where you have to implement this. Okay, where you will have to implement it. For all these things, you will be certified, which you can add in your university credit point system, in your resume, and later on for your job also. Sounds good enough? Hmm? Sounds good enough? Yeah? No? Sounds good enough, guys. Hmm? Yeah. It would be purely on your, how responsive you guys are. Okay. If you don't see good participation, if you're not interested, I'll not put time, to be very honest. तुम्हें चाहिए तो करते हैं, बहुत सारी चीजें करेंगे, मस्त चीजें करेंगे, ठीक है? एंड एनीवेज किसी इज लाइक, it's my college, yeah. No, I'll do everything and anything for you, right? As a senior, I'll do everything possible, provided you want it. तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर क्यों ही काम वेस्ट करेंगे हम लोग, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? दिस इज द एजेंडा. ठीक है? तो ये एंड ऑफ दिस सेशन वी विल टेक अ कंसेंट आल्सो. चलो, next 15 minutes sharp I will explain you different SDLC model and Scrum model, and next meeting का क्या agenda होगा and why this is so important. SDLC talks about the process. Okay, this is the process that you have to implement it. तो SDLC कहाँ से आया? पहले एक ने प्रोजेक्ट बनाया, बहुत सारे चैलेंजेस आए. फिर किसी ने प्रोजेक्ट बनाया, बहुत सारे चैलेंज आए. फिर उसने बोला ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं. फिर बोला अरे वाह, ये चेंज करने से ये चीज फिक्स हो गई. ऐसे करते 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 हमें 200 साल लगे. कितने साल लगे?
200 साल लगे हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1 जहाँ पे एसडीएलसी फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, देन डीआरडीओ से लेकर के नासा, सबने रिसर्च किया हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, हाउ टू मैनेज अ प्रोजेक्ट, राइट। मिसाइल भेजनी है, लूनार मिसाइल भेजना है, एसडीएलसी यूज होता है दोस्त। कैसे परफेक्ट करे, कई बार तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही, कॉस्ट बढ़ जा रहा है, राइट। बहुत ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग टीम में, सी nobody asked me this question, sir, why do we want less number of people? You should have asked me. No common sense दोस्त, अगर सही ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सेंस है, इमेजिनेशन है, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मतलब यू कैन स्केल अप, यू कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ इफ यू हैव दीज थ्री बेसिक थिंग्स। क्या बेसिक तीन चीजें चाहिए लाइफ में? कॉमन सेंस, इमेजिनेशन, यू शुड बी अ विजनरी पर्सन, एंड ऑब्जर्वेशन। आप देख करके आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा क्यों है ये? अगर आपका ऑब्जर्वेशन वीक है, आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है, और आपका कॉमन सेंस कमजोर है, बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं मार पाओगे। वाई वी वॉन्ट लेस टीम? दे दो ना और टीम, पैसे नहीं है क्या? इतनी क्या गरीबी छाई हुई है? एनी वन हु कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन, anyone who can address this question next time, if anyone is able to answer my question next time, if I come to KC college, I'll give you a treat. Oh wow, do you think, Nivedita, too many quicks? All right, so we already have a winner. So Nivedita, congratulations, right? You have won the bumper treat. And Nivedita, next time when I'm in college, I'll give you some treat. Yeah, exactly. Too many quick, too many cook, spoil the broth, right? जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा डिस्कशन होगा, उतने ज्यादा पर्सनालिटीज, उतना ज्यादा उनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो टाइम बचेगा नहीं। If there are too many people, it will not save your time. On contrary, what we have observed, it will waste lot of time. Important मिशन पे भेजना है ना, तो 4-5 एक्सपर्ट को भेज दो, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे आप, rather than 100 लोग जाओ। एक बोलेगा अरे नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से चलते हैं, दूसरा बोलेगा अरे नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से चलते हैं। होगा ना ऐसा? 4-5 लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, 5 people smart people, right? They'll be give you better result than 100 people with 100 different personality. टीम बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा यार। पहले यही होता था, पहले माई आईटी टीम वाज वेरी बिग, इसीलिए स्टूपिड सॉफ्टवेयर बनते थे। आज बुक माई शो, डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर मैनेजिंग बुक माई शो? डू यू नो दिस? डू यू नो दिस, हाउ मेनी पीपल आर मैनेजिंग बुक माई शो? Yeah, the entire book my show is, the show is run by just 15 people. Can you believe it? The entire show is run by just 15 people. हाँ, 10-15 कोर टीम में 15 ही लोग हैं यार। आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर 2011, 10, 10, 11, आई रिमेम्बर 2010 and 11, स्टेपल्स, ठीक है, द कंपनी नेम इज स्टेपल्स, वर्ल्ड बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्टेशनरी प्रोवाइडर एज ऑफ टुडे आल्सो। तुमने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि कॉर्पोरेट को स्टेशनरी मिलती है। मुंबई में 2-3 मॉल्स में है स्टेपल्स। स्टेपल्स रेड कलर का बैकग्राउंड होता है, व्हाइट कलर का लोगो है, स्टेपल्स, राइट। स्टेपल इज, तुम्हें पेंसिल चाहिए, तुम स्टेशनरी से खरीद लोगे, करेक्ट? हाँ, अगर टीसीएस को 1 लाख पेंसिल चाहिए तो टीसीएस क्या करेगा? स्टेशनरी के पास जाएगा खरीदने के लिए। हाँ, किसी ने सोचा है बात, राइट? तुमको माउस चाहिए, तुम अमेजोन से ऑर्डर कर लोगे। अभी फ्लिपकार्ट को माउस चाहिए तो क्या अपनी वेबसाइट पे जाकर के ऑर्डर करेगा माउस? नो, राइट? So there is a company which is the world biggest company which provides corporate stationeries.
कॉर्पोरेट को स्टेशनरी देता है वो, ठीक है। टीसीएस, आईबीएम, विप्रो ट्रक भर के स्टेशनरी जाती है उनके पास, ठीक है, उसका बिल रेज होता है। सो इट यूज टू गिव स्टेशनरी टू एक्सिस बैंक, लॉट ऑफ बैंक्स एंड लॉट ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो वो ऑर्डर आता था, ठीक है, वो ऑर्डर आया, डिलीवरी वाला आया, ऑर्डर चालान रिसीव होता था, ट्रक में लोड हुआ, फिर वो डिलीवरी चालान का रिसिप्ट आता था, फिर वो चीज डिलीवर होती थी, तो डिलीवरी का रिसिप्ट नोट जनरेट होता था, रिसिप्ट नोट जनरेट होता था तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता था, एसएपी अभी भी है, राइट, सेल्स फोर्स अभी भी है, उस पे वो चीज अपलोड होती थी, फिर इनवॉइस जनरेट होता था, फिर इनवॉइस क्लियर होने के लिए जाता था, ये पूरा एक सिस्टम पे काम करता था, राइट, ठीक है। पूछो ये जो डेवलपमेंट टीम थी ना, जो ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करती थी और डेवलप करती थी, उसमें कितने लोग, कितने लोग थे, हाउ मेनी पीपल वे देयर? बस एक इंसान, राइट, एक ही इंसान। सो दिस इज व्हाट माय इंडस्ट्री हैव कम टू। चार पांच लोग हैं, पूरा शो रन करेंगे, राइट। बिना एसडीएलसी और स्क्रम और एजाइल के नहीं हो पाए, पॉसिबल ही नहीं। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल टू run the show without these 2 to 3 things. Number one, प्रोसेस परफेक्ट है, ये प्रोसेस में आप कोई भी फेज एज पर गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम, वो भी क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, वो भी प्री डिटरमाइंड है, राइट। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, पहले दूध डालना होता है, पहले पानी डालते हैं, दूध पहले डालोगे तो उसकी वजह से कुछ और होगा, इट इज प्री डिटरमाइंड ऑलरेडी। इन दिस फेज इफ यू डू नॉट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, समथिंग एल्स विल हैपन, प्री डिटरमाइंड है। And this is one of the reasons why big companies they fail. Snapdeal failed like this. Okay, recently I was mentoring Kellogg's. Kellogg's पता है? Do you guys know Kellogg's? Yeah, Kellogg's पता है, नहीं पता यार? Kellogg's Yes, कंपनी है sir. पूरी बड़ी. Yeah. Okay. So we were fixing their process or fixing their process worldwide. So suddenly a lot of players have come into picture and they all started, facing a lot of loss. So then I went and we reviewed the process. CEO मीटिंग, डायरेक्टर मीटिंग, एचओडी मीटिंग, डिपार्टमेंट मीटिंग, क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस स्टडी किया, समझ में आया। हाँ, तो वी रियलाइज इट कि ये इसमें उन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। तो क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें है ना, आपने पढ़ा भी होगा, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नॉट। So when you do planning, there is requirement engineering. Have you guys studied about requirement engineering, requirement elicitation, principles of requirement gathering? थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है? Steps in requirement elicitation and steps in requirement gathering. थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी कुछ याद आ रही है, एनालिसिस, वेराइटीज ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज, थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है, तो देयर इज साइंस बिहाइंड इट, साइंस बिहाइंड डिजाइनिंग, right, there are 4 levels of designing, right, component level design, architecture level design, UI level design, right. Do you know the concept of modularity? Do you know the concept of layering? Do you know the concept of coupling and layering, coupling and cohesion? कुछ याद आ रहा है तो थोड़ा बहुत नाम याद आ रहा है क्या? कपलिंग, लेयरिंग, मॉड्युलैरिटी, ये सब है। ये देखने के लिए नहीं होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें है ना। हाँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी,
In the coming up session, guys, we'll take it from zero. Today is introduction. आज है ना अलाइन हो जाओ इंडस्ट्री के ओरिएंटेड. अब तक पढ़ा नहीं पढ़ा क्या किया आई डोंट केयर, बट नाउ इफ यू आर हियर we'll train you. Final year, right? Final year. First year, I think when we met up, you were in your first year, so we like ठीक है. हमने बड़ा chill subject लिया था ना, soft skills था. Chill subject. And I'm pretty sure, um, अगर आपको realize हुआ होगा how soft skills are important, from first year to third year, you must have seen a lot of personality change in you. Right? Environment का काफी फर्क पड़ा होगा. Am I right? Especially in last 1 year since COVID is not there. अगर आप एक क्विक सेल्फ एनालिसिस करोगे यू हैव सीन कि यार मैं पहले कैसे था, अभी मैं थोड़ा स्मार्ट हो गया हूँ, थोड़ा और अच्छे से बोल पाता हूँ. बट दोस चेंजेस आर इम्पोर्टेंट. सेम वे हियर ऑल्सो टेक्निकल पार्ट में भी दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ व्हेन यू आर implementing so many things, what are the chances कि I will forget this while implementing, and rather than using it I will use my own brain, rather than using the principles of my advanced software development methodologies I will use my own brain. What are the chances? अरे मुझे पता है ऐसे ही होता है, मैं देख लूंगा. What are the chances, guys? Very high. Trust me, CEOs make this mistake, and big companies. Flipkart had failed because of this. Flipkart failed twice because of this. Snapdeal has failed because of this. Many companies are struggling because of this, right? And my profession exists because of this. So we go and we optimize the process. We find out the gap, and we try to fix it, right? Same way how we go to university and we fix the gap with university and the industry. तो ये इम्प्लीमेंट करना होता है पूरा का पूरा. चलो वेरी क्विकली. स्टेज नंबर 1. This could be two phases or maybe combined into one. Starts with requirement gathering and then planning and then analysis. Requirement gathering means मुझे क्या बनाना है यार, मुझे क्या बनाना है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, इसको स्टडी करना पड़ता है. वंस यू स्टडी इट यू प्लान इट आउट. इसमें से अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कैसे बनेगा, राइट? एंड देन वंस यू हैव मेड द प्लान you have to analyze it also कि सही बना है प्लानिंग जो मैंने की है या नहीं. And after all of these things you produce a report called as project charter. Either you produce project charter reports. ये पढ़ा है project charter, high level detailing of your project. Have you studied this, guys? Yes, no? नाम सुना है SRS, project charter? नाम सुन, अरे बोल दो ना, सुनना नाम सुना है तो भी चलेगा. I am not expecting you to know everything, it's okay, but are you having idea about these terms or not? Because if not, I will explain it to you. Project Charter, SRS, have you heard the name? Software Requirement Specification, have you heard the name, guys? यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में स्कोप वगैरह पूरी लिखते हैं. ठीक है, या सुना है ना? ठीक है, बस है उतना सुनना है ना, उतना बहुत है बस. ठीक है. ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इट्स प्रोजेक्ट चार्टर का ही पार्ट है. प्रोजेक्ट चार्टर मतलब हाई लेवल राइटिंग डाउन एवरीथिंग, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. दिस विल हैपन इन दिस 3 स्टेजेस. ओके, नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे इस स्टेजेस के बारे में वेरी क्विक रिकैप आई विल डू एवरीथिंग, राइट? विल वेरी क्विक रिकैप, आई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल हाईलाइट यू कैसे करना चाहिए यूजिंग केस स्टडीज. विल डू ऑल केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल. आज थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं. ओके, आज भी केस स्टडी ही कर रहे हैं. आर वी डिस्कसिंग थ्योरी और वी डूइंग केस स्टडीज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री. केस स्टडी है ये, ठीक है? ओके. Then once it is done, you design it. When you talk about designing, it's not about UI design. कलर वलर नहीं होता डिजाइन, ठीक है? डिजाइन के 4 लेयर्स होते हैं. डेटा लेयर, डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, UI डिजाइन, इसमें कलर रहता है, एंड लास्ट कंपोनेंट डिजाइन.
4 लेवल्स में आपको डिजाइन करना होगा. ओके, इट्स नॉट कि यू गॉट एन आइडिया यू स्टार्ट कोडिंग. कोडिंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर अस. हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो कोडिंग की कोई वैल्यू नहीं. राइट, वी डोंट केयर अबाउट कोडिंग. कोडिंग एआई करके दे देगा तुम्हें. कोड फ्री में इंटरनेट पे मिलता है ना. मिल जाएगा यार. वी डोंट केयर अबाउट कोडिंग, वी केयर अबाउट एवरीथिंग एल्स. So data layering में we see how the data will happen. We see architecture, हम इसको build कैसे करेंगे. Then we do UI and then we see different components हम कैसे design करेंगे. We'll get into details, don't worry. अगर ऊपर से जा रहा है तो ठीक है, don't worry. And then we create more reports. अच्छा, ये entity diagram, ER diagram ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? Use case diagram, वो ऐसे stick wick बना करके ऐसे 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 कुछ किया है क्या? Have you guys done it? Or you are learning to do it? Good, good, good. बस ठीक है, ठीक है, ठीक है. इतने से काम चल जाएगा. Right? Analyzing and studying a system from various different perspectives. Okay. Object oriented programming पढ़ा है आपने? Hmm. I can bet, I can bet none of you truly understand what it is. And apart from Scrum, Agile, SDLC, एक चीज और पूछेगा आपसे, which is a mandatory requirement for any software engineer in the industry is oops आता है क्या? कोई भी job description पकड़ लो, oops आता है क्या? And I can tell you, you don't understand oops, right? You don't understand oops. Yes, आपको पता है oops क्या है, क्यों है. oops ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. उसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, एंटिटी होता है, ये सब आपको पता है, करेक्ट? इतना पता है आपको, राइट? मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, oops क्यों यूज करना है, कौन बताएगा? oops क्यों आया भाई, क्यों चाहिए oops? ये इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन नहीं करना यार, क्यों करना है, कौन बताएगा? Why do we need oops? Yeah, do you have an answer, yes or no? If you don't have an answer, I'll help you understand. नहीं, ऐसे बेइज्जती नहीं कर रहे दोस्तों, समझ रहे हैं चीजें. फास्ट नहीं, इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रेरणा. ऊप सीखने में एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास, पूछो यहाँ बहुत सारे होंगे जिनको अभी भी नहीं पता है ये क्या है. कंस्ट्रक्टर, हाँ एफिशिएंट है, क्यों यूज क्यों करना है, क्यों यूज करना है, कहाँ से आया ऊप्स, क्यों चाहिए? सब बोल रहे ऊप्स आना चाहिए, ऊप्स आना चाहिए, क्या है ऊप्स? Very good, Shweta, to break down a larger problem into manageable components. Good, good. बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे कोडिंग में, है ना ऐसा? दोस्त जावा में स्ट्रगल कर रहे हो? है तो बता दो, मैं हेल्प करूंगा यार. यहाँ है ना. Is it difficult to write programs? Complex logics in programs. You find programming very difficult. Yeah, you are at right place if you find it. Programming में मन ही नहीं लगता है. So very quickly, we'll get into detail, guys. Don't worry. We'll get into details of everything. Okay, today is just an introduction or a eye opener session kind of a thing, or just a healthy discussion and case study. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में एनालिसिस करना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में डिजाइन करना आना चाहिए. इफ यू नो, डू यू गाइस नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन? डू यू गाइस नो इट? हैव यू गाइस एवर हर्ड ऑफ इट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस.
यस नो? नहीं सुना है। सुनो, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होती है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। नाउ माय प्रॉब्लम हियर विद माय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में एनालिसिस कैसे करना है नहीं पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में डिजाइन कैसे करना है नहीं पता है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज, राइट? व्हाट इट इज, ओके, अंडरस्टूड. So we'll talk about in future what is object oriented analysis and design, and then how it is used for object oriented programming. ये भी देखेंगे आगे दोस्तों। ये ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता है, इसको पता करने में 5-6 साल लग जाते हैं दुनिया में, तो आपके 5 साल बचाएंगे हम। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग। ओके, ऑल राइट. Then you go and do implementation. Then you go and do implementation, right? Then you go and do implementation. Implementation is all about coding, object oriented programming में code करना. Then there are a lot of testing mechanisms. आज automation testing वगैरह आ गया है. Do you guys know how to do automation testing? Selenium WebDriver, Selenium IDE है, कुछ आइडिया है? नहीं? नो? कोई बात. यस, थोड़ा आइडिया है. आइडिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी कोई बात नहीं. यू कैन आस्क, आई विल वर्क आउट समथिंग फॉर यू. ओके, देन मेंटेनेंस में हमारा maintenance and deployment are together. So deployment, now we are moved towards cloud. You should know AWS, you should know Docker, you should know Kubernetes. Have you guys learned Docker, Kubernetes? Docker, Kubernetes, Jenkins, AWS, containerization, orchestration. Yeah, those things are there. So when you do a planning, you become a business analyst. One of the highest paying jobs आज के तारीख में industry में. Business analyst. Kubernetes you have learned, very good. Then you should have learned or Docker also. Docker भी आपने देखा होगा. ठीक है, we'll do a lot of things. Don't worry. If you have a brief idea about these things, more than enough. Right? When you'll come for further training programs, we will take it into industry things. Industry में कहाँ यूज होता है देखेंगे. AWS पे कैसे EC2, S3, Lambda, all those things, how do we use it? बता देंगे आपको सारी चीजें practically. Okay. And we'll give you case studies and we'll give you live projects also. S3 bucket किया है, very nice, good, good, very good. Planning, if you are good with planning, you are my business analyst, one of the highest paying jobs, right? If you are good with planning analysis, you are my project manager. Ultimately यही जाना है. And let me tell you, if you know all of these things, you can scale up to become a project manager in less than 3 years. I was the youngest project manager of Infosys. ठीक है, 3 साल में मैं project manager बन गया. Because I had great deal of understanding about these subjects, right? Interesting fact, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये कॉन्सेप्ट है ना, शालिनी मैम ने पढ़ाया था मुझे. आई डोंट नो, मैम को याद है नहीं याद. मैम यूज्ड टू टीच अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज एसएसएडी एंड ओएडी. तब ये नया नया आया था, तब लोगों को इन पता नहीं बच्चों था. को भी सिखाया है, बट दे आर नॉट अवेयर. They don't remember UML diagrams. ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं मैम, याद दिला They देंगे. they don't they don't remember class diagram. They don't remember state diagram. They don't remember use case diagram. Okay. ओके The ओके ओके. reason is the reason is they feel that this software engineering and this project management, these are all useless. Okay, subjects. Okay, these are all theoretical subjects.
Okay, they can study of their own and then they can clear the exams. Okay, they feel that this programming, learning programming, how to write a program, that is the most important thing. दोस्त मैं एकदम बेट लगा के बता रहा हूँ एंड if you really want to be a software engineer, if you want to come in my IT industry, मैं एक टाइम पे ना programming is the least important thing for me. For me, see, when I hire you, I will not hire you कि ये जिंदगी भर मेरे के लिए ना कोडिंग करके देगा. मैं आपको अगर हायर करूंगा तो क्यों हायर करूंगा? I'll hire you because I want you to become my project manager, team leader. Am I right? Am I right? I want you to scale up in my company, grow in my company, and grow my company also. Right? I want to hire project managers. I want to hire team leaders. And आप भी क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? आप भी यही चाहते हो ना कि तुम्हें डेवलपर बनना है. डेवलपर की ज्यादा सैलरी नहीं है दोस्त. प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इनकी सैलरी है. Right? You want to scale up there. Only thing that is required is software engineering. तुम्हें ये आता है, थ्योरी नहीं, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए. सीटीओ, थ्योरी नहीं, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए. ओके, आइडियाज बहुत है, आइडियाज इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए. कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये प्रोसेस है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट, नहीं बना सकते. आज ई कॉमर्स, यू गाइज मस्ट बी अवेयर, यू गाइज आर गुड विद प्रोग्रामिंग, यू गाइज आर गुड विद टूल. एम आई राइट? आई बिलीव स्टूडेंट्स आर वेरी गुड विद टूल्स. ठीक है, बहुत टूल्स यूज करते हो तुम लोग. इनफैक्ट कई बार स्टूडेंट्स हमें बताया, सर ये टूल यूज करो जल्दी हो जाएगा. मतलब अच्छा, ये भी आया है क्या कुछ नया? हाँ, राइट. तो टूल्स है ना, चेंज होते रहते हैं दोस्त. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और है. Tools keep changing. What will never change is the scientific law and principle, right? And software engineering is the scientific law and the principle. HDLC is scientific law and principle, right? If you know this, if you don't know this, if you don't understand this, कोई मतलब ही नहीं है. अब तुम आ जाओ, तुम्हें डेवलपर बना देंगे. अब तुम बोलोगे कि सर मुझे सीटीओ बना दो, बट क्योंकि your job is to make sure that SDLC is being followed. For that, you should have a clear understanding. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. प्रॉब्लम क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? आई टेल यू, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट? ट्रस्ट मी, नॉट एग्जैजरेटिंग, इज एज कॉम्प्लेक्स एज बिल्डिंग अ एरोप्लेन इंजन. इतना कॉम्प्लेक्स है ये. हाँ, ये होता है कि सॉफ्टवेयर है ना, तो घर बैठे बैठे बनता है, तो वो उसको वो क्रेडिट नहीं मिलती यार. कोई देता ही नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर को उतनी क्रेडिट. वही अगर मैं बोलूँ मैंने कार बनाया तो बहुत क्रेडिट मिलेगा. एम आई राइट? अगर मैं बोलूँ मैंने कार बनाया, ये देखो ये मेरा कार डिजाइन है, तो बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगी ना. अरे कार बनाया तूने, वही मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं तो लोग क्या बोले हैं, सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, मैं भी बना सकता हूँ. डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इधर पे जा, नाम डाल, इधर भी बन जाता है, अपने आप भी बना के दे देता है. ऐसे नहीं होता. वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इफ यू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोस्त, यू विल क्लियर योर इंटरव्यूज वेरी फास्ट. इंटरव्यू में जाओ, बोलो सर आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ एचडीएलसी. बोले व्हाट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एचडीएलसी की बातें कर रहे हैं? ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है ना, रोता था ना तू इससे. नहीं सर, आई नो व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ से है. इफ आई आस्क्ड यू व्हाट इज oops, तुमने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सर इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम which has got object and classes and there are many features like in polymorphism and encapsulation. ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी आंसर होता है. हेलो, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? He said, sir, because today we are trying to build up complex softwares, and the earlier approach, which was functional approach, and in the functional approach we would focus more on functionalities. Rather than that, now we are considering everything as entity, real world things, right? And now the perspective in which we are trying to understand a system is, we consider every individual, living or non-living, that is interacting with the system, which we call as an object, and we study the relationship of these objects, how they are interacting with each other, and accordingly we are designing our software. Why are we designing it in an object way? The reason why we are designing it in an object way, because
Just by considering everything as object, we get a lot of additional benefits, like we can reuse it. Right? One thing can be used in many forms, which is polymorphism. Right? अभी कैसा है ना, फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ओके, एंड देन विल कंक्लूड दिस सेशन. लॉगिन बनाना है, रजिस्टर बनाना है, करेक्ट. अभी आपको सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो आप क्या बनाओगे? अरे लॉगिन बना दे, रजिस्टर बना दे, ऑर्डर पेज बना दे, पेमेंट पेज बना दे. दिस वुड बी योर अप्रोच, करेक्ट? एम आई राइट? This would be your approach, right? If I tell you make a small e-commerce, this would be your approach, correct? Yes guys, कि यार पहले लॉगिन बनाता हूँ और फिर एक रजिस्टर पेज बनाऊंगा, फिर एक पेमेंट बनाऊंगा. This approach is wrong. This is what we call it as functional approach. This is not an object oriented approach. ये क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आपको OOAD नहीं पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन नहीं पता, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है. तो आप सोचते हो फंक्शनल वे में, कोडिंग आप करते हो जबरदस्ती object way में. So you are not actually using the capabilities of object. So we never code login. हम क्या कोड करते हैं पता है? हम यूजर कोड करते हैं. One single page of code which will have only user. User can log in, user can register, user can log out. One page of code, one function. That's it. User. We do not have two separate codes for login and register. Do you know this? This is called as object approach. हमारा दो अलग पेज होता ही नहीं है कोड. हमारा एक ही फंक्शन होता है, वही फंक्शन लॉगिन करेगा, वही फंक्शन रजिस्टर करेगा और वही फंक्शन ट्रैक करेगा. 5 लाइन ऑफ कोड, लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट, सेशन मैनेजमेंट, डन इन जस्ट 5 लाइन ऑफ कोड. आपका ऐसा अप्रोच नहीं होगा. आई बेट यू. आप एक लॉगिन पेज अलग बनाओगे, आप एक रजिस्टर पेज अलग बनाओगे, आपका डेटाबेस भी वैसे ही बनेगा. दैट्स फंक्शनल अप्रोच. दैट्स व्हाई योर वे ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इट विल नॉट स्केल अप. इसलिए यूनिवर्सिटीज से ना स्टार्टअप निकलते ही नहीं हमारे, आईआईटी से निकलते हैं बस. हैव यू एवर हर्ड ऑफ, मतलब ये कभी क्वेश्चन पूछा है आपने कि यार आईआईटी से ही क्यों स्टार्टअप निकल रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज में कुछ अलग है क्या? SDLC is SDLC for everyone, right? So why is an IITian able to build up a software which is making 1,000 crore of sales in 2 years, and why my KC college is not able to do it? Do we lack ideas? We lack we lack use of scientific laws and principles. What are the problems? Number one, हमें पता ही नहीं इंडस्ट्री में क्या चाहिए. ठीक है, आईटीज में क्या होता है, उनके सीनियर्स इंडस्ट्री में मस्त मचा रहे होते हैं, वो आते हैं, वो बताते हैं ब्रो सब ऐसा होता है इंडस्ट्री में, वो एकदम फॉलो करते हैं. हमारे यहाँ पे बच्चे आते ही नहीं है क्लास में, बोला इंडस्ट्री एक्सपर्ट रखा है, कोई आएगा ही नहीं, छुट्टी. ओके. दूसरा चीज, आईआईटीज में दे बिलीव इन मेंटोरशिप. लाइफ में आगे बढ़ना है, एक मेंटोर पकड़ो, उसको फॉलो करो, आंख बंद करके, कहानी खत्म. हमारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, ये क्या सिखाएगा मुझे, हम इंटरनेट से सब सीख लेंगे, विच इज अ बिग प्रॉब्लम. Okay, because most of the things on internet are outdated. See, if I know so many things, why will I teach you for free? Or why will I put it on YouTube? Or why will I put it on Instagram? Right? और अगर मैं सही में इंडस्ट्री एक्सपोर्ट हूँ तो मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ, है ना? मेरे पास खाने का टाइम नहीं है ब्रो, मैं यूट्यूब वीडियोस थोड़ी ना बनाने बैठूँ. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चन दोस फंडामेंटल थिंग्स. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच समझो, यूजर बनता है बस. यूजर इज द ऑब्जेक्ट, करेक्ट? यूजर मेरा क्लास हो गया, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो मैं ये बनाता ही नहीं हूँ कभी भी. ये आपके प्रोजेक्ट में अगर है तो आपको SDLC आता है, नहीं होता यूजुअली आपको SDLC नहीं आता. दैट मीन्स योर सॉफ्टवेयर कैन नॉट स्केल. गुड क्वालिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर, मैम ने ये पढ़ाया होगा, आपने आंख बंद करके इग्नोर कर दिया होगा. सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल, मेंटेनेबल, स्केलेबल, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए. देयर आर 7 to 8 क्वालिटीज ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर. रिलायबल, मेंटेनेबल, स्केलेबल, यूजेबल, एसेसेबल, है ना? ऐसे 10-12 वर्ड सुने. रिलायबल, मेंटेनेबल, यूजेबल, स्केलेबल, एसेसेबल. These are the exact words from your textbook.
हाँ ये तभी बनेगा जब तुम ये यूज करोगे, तुम्हें नहीं आता यूज करना। करेक्ट, यू सी how knowledge is not helping you, you need skills also. Done. Okay. Business consultant, project manager, team leader, solution architect, system architect, high paying jobs, 10 to 12 lakhs rupees per annum, right? That's the job. Okay, solution architect, system architect, UX designer, DBA, database designer, right? Okay, analytics, business analyst, system analyst, project manager, team leader, software consultant, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोल। इधर पे आ गया मेरा डेवलपर, डेवलपर, राइट। टेस्टर, 3 टाइप्स, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, क्वालिटी टेस्टिंग इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। आई बेट यू हैव नो आइडिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री, है ना? आई बेट। अरे बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यार, बस बता रहा हूँ दुनिया में और क्या क्या चीजें, बता रहा हूँ दुनिया में और क्या क्या चीजें, ठीक है? और आपको हेल्प करूंगा मैं, प्रोवाइडेड वी आर एबल टू come on same page. And along with this, there are some other special roles called as Scrum Master role. ठीक है? मेंटेनेंस में DevOps इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 roles versus one developer role. क्या चाहिए तुम्हें? डेवलपर चाहिए या बाकी रोल डेवलप करना, या सारे ही कर लो? You should be ready with all the roles. ठीक है? Today we want you to be an expert in all the roles. We'll cover up all these roles. SDLC देखेंगे हम लोग पहले इम्प्लीमेंट करना। SDLC का सारे स्टेजेस हैं, कैसे जाता है स्टेप बाय स्टेप। एक लाइव प्रोजेक्ट लेकर के इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है हमारा। अप्रोच में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, डेवलप कर लोगे तो मुझे पता है, राइट? लेकिन क्या और कैसे बनाना है वो तुम्हें नहीं पता है, वो मुझे पता है। सो आई विल ट्रेन यू फॉर द सेम। ओके, नेक्स्ट SDLC के बहुत सारे मॉडल्स हैं, राइट? इफ यू रिमेंबर आई विल टेल यू मॉडल में क्या क्या मॉडल्स हैं। एक्सपी मॉडल है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल। कौन सी कंपनीज यूज करते हैं तुम्हें नहीं पता होगा, इंटरनेट पे बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं बता दूंगा, राइट? विच ऑल कंपनीज आर यूजिंग एक्सपी मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल। ओके, देयर इज kanban मॉडल। आई विल टेल यू which companies are using kanban मॉडल और क्यों। ओके, देन वी आल्सो हैव FDD मॉडल, फीचर ड्रिवन मॉडल। कौन सी कंपनी फीचर ड्रिवन मॉडल यूज कर रही है? क्रिस्टल मॉडल कौन सी कंपनीज यूज कर रही है? SDLC के वेरियस डिफरेंट SDLC के बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स में एजाइल मॉडल है, एजाइल मॉडल के अंदर ये सारे मॉडल्स हैं। Okay, waterfall model, this model, that model led to my agile model. Okay, because of some reason which nobody asked. Agile model क्यों popular हो रहा है? Nobody have any idea. I'll tell you that also fundamental level. Right? Crystal model, Cannon model, Ray model, rapid access development. ऐसे बहुत सारे मॉडल्स निकल गए। और एक मॉडल जो आज बहुत पॉपुलर चल रहा है, 90% इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, कॉल स्क्रम एजाइल मॉडल। स्क्रम एजाइल मॉडल बाय यूजिंग SDLC दो तीन चीजें प्रॉमिस होती है दोस्त। टाइम कम लगता है, क्यों? क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच है। ओके, कॉस्ट कम लगता है क्योंकि यू आर नॉट रीडूइंग एनी वर्क। ओके, रीडूइंग एनी वर्क, बट SDLC nowhere talks about how to work in less team size and how to take care of the change. टाइम और कॉस्ट हो जाता है क्योंकि आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच में काम कर रहे हो तो कम टाइम पे काम हो जाता है। मिनिमम ऑप्टिमाइज टाइम पे यू कैन डू अ वर्क, एंड एज अ रिजल्ट यू आर एबल टू reduce the cost also because there is no rework. But simple SDLC is not talking anything about ये चेंज आएगा तो क्या करेंगे और कम टीम में कैसे काम करेंगे। SDLC में कहीं दिख रहा है तुम्हें? कैन यू विजुअलाइज एनीवेयर? कॉमन सेंस वाली, जिसे कॉमन सेंस कहीं तुम्हें दिख रहा है लॉजिक
कि इसमें टाइम चेंज और टीम का कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है? नो राइट? नो राइट? Not at all. And that is where my Scrum has come into picture. My Scrum is a special case of, so SDLC. SDLC के अंदर there is agile model. Agile means change. एक ऐसा मॉडल improvised होके आया which will talk about how to change, how to manage when there is a lot of change, which is what is happening in my industry. Oh, a lot of change. At the same time, this talks about change. इसके बहुत मॉडल्स हैं. फिर एक चैलेंज है कि कम टीम में काम करना है और हमें सॉफ्टवेयर 4 महीने बाद नहीं चाहिए, आज ही चाहिए. एजाइल में देयर आर मेनी मॉडल्स, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल आर देयर, एफडीडी मॉडल, क्रिस्टल मॉडल, बहुत सारे मॉडल हैं. एक नया प्रॉब्लम आ गया, क्या आज ही चाहिए सॉफ्टवेयर, सुबह रिक्वायरमेंट दिया, शाम को सॉफ्टवेयर चाहिए. टाइम और दोनों कम. So agile में another model came into picture which is called as Scrum model, which talks about how to work in a small team, how to work with change, and how to work in less time, and hence how to reduce cost. Ultimate goal is, out of so many techniques, so many models, how do I build a very complex software, a very quality software in less time, less team, less cost, and no matter how much changes come, I should be easily able to accommodate it. Q is equals to TC square. समझ में आया क्या? कुछ स्क्रम क्यों चाहिए अभी? Is it absolute clear why Scrum has come into picture now? Starting from my industry, 1800, 1700 BC. Is it clear? Yes or no, guys? A quick feedback, please. Why Scrum is the requirement now? Are you able to connect everything that you have learned in your book to the industry case study that we did today? Yeah? Okay. 3 minutes more. Let me talk about Scrum overview and then we'll close this session and then I'll see you again very soon with the practical aspect of it. स्क्रम क्या बोलता है? पूरे बड़े प्रोजेक्ट को ना चेक पॉइंट्स में डिवाइड कर दो. सुनो, मैंने तुम्हें एक काम दिया, आई गिव यू अ प्रोजेक्ट एंड देन मैं 3 महीने बाद पूछूंगा तुमसे, अरे क्या हुआ प्रोजेक्ट का? व्हाट आर द चांसेस कि तुम, क्योंकि मैं बार बार पूछ नहीं रहा हूँ तुमसे क्या है स्टेटस, तो व्हाट आर द चांसेस कि यू विल टेक इट लाइटली? ह्यूमन साइकोलॉजी. व्हाट आर द चांसेस? आई गिव यू मनी, तुमको पैसा दिया, मैंने 4 महीने तक तुमसे पूछा ही नहीं. व्हाट आर द चांसेस कि तुम भी उसको तुम भी पूछने वाले नहीं हो? व्हाट आर द चांसेस? वेरी हाई. वेरी हाई, राइट? Yeah, very high. Yeah, do you agree with me? Human psychology. Scrum deals with human psychology too. Very high, yeah, very high. Thank you, Anuj. Thank you, Anuj. Okay. So what here we do is, हमें ना पूरे प्रोजेक्ट को ना छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं. We divide the complete project into small checkpoints, right? And this checkpoint is called as sprint. What we do in sprint is, at a given time fixed, sprint is fixed at a given fixed time, which is in weeks. एक वीक, 2 वीक या 3 वीक या 4 वीक हम डिसाइड कर लेते हैं, कोई सा भी, चलो 4 वीक. So we first decide कि my sprint का size would be 4 weeks or 2 weeks or 3 weeks or maybe 1 week. फिर हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी टीम 4 weeks में मिलेगी और हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या चल रहा है और हम देखेंगे हमारी क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन रही है नहीं बन रही. वी विल ऑल्सो चेक हमारा SRS जो बनाया है उसके हिसाब से वी आर ऑन द सेम ट्रैक और नॉट. We will also call the client. We will also call the user. Checkpoints. So हम पूरे प्रोजेक्ट को इक्वल चेक पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट स्प्रिंट विल बी ऑन 4 वीक, नेक्स्ट 4 वीक्स. ये स्प्रिंट का नाम एंड नंबर दे देते हैं, स्प्रिंट नंबर 1, स्प्रिंट नंबर 2, स्प्रिंट नंबर 3.
Likewise, we try to finish off a sprint in certain number of sprints. Clear? Clear? So एक sprint is 1 to 4 week. 1 to 4 week. Any doubts that you are having? Let me repeat a sentence and then you tell me कि कुछ डाउट मन में आ रहा है क्या, क्यूरियोसिटी मन में आ रही है क्या, यू टेल मी. स्प्रिंट इज ऑफ 1 week to 4 week. एक वीक भी रख सकते हो, 2 वीक भी रख सकते हो, 3 वीक का भी रख सकते हो, 4 वीक का. इट्स अ चेक पॉइंट. अगर हमने 2 वीक डिसाइड किया, ऐसे नहीं होता कि पहले 1 वीक रख लो, फिर 2 वीक रख लो, फिर 4 वीक. जो एक डिसाइड होगा उतना ही रहेगा. मतलब आज अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इफ आई से 2 weeks, so 2 weeks बाद पूरी टीम मिलेगी and we'll see where we are reached. We'll also call the client and we'll also open all the document. ये डिस्कस हुआ था, यही बना नहीं बना. फिर वापस नेक्स्ट 2 वीक के बाद मिलेंगे, फिर 2 वीक्स के बाद, ऐसे जब तक फिनिश नहीं होता प्रोजेक्ट तब तक मिलते रहेगा. इसको बोलते हैं स्प्रिंट. दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? स्प्रिंट 1 to 4 week का होता है. टीम डिसाइड्स, स्क्रम मास्टर डिसाइड करता है 1 वीक का होगा कि 4 वीक का होगा. कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आस्क मी अ क्वेश्चन. The question to understand here is, sir, how to decide sprint 1 week का रहेगा या 2 week का रहेगा या 3 week का रहेगा या 4 week का रहेगा? As a scrum master, how will I decide? How do why? But what if client does not want to come again? तो client को report भेज देंगे यार, नहीं आ रहा है तो कोई बात. Okay, scrum report बनती है, client को भेज देंगे. Minutes of meeting बनता है, भेज देते हैं client को. ठीक है, तो नहीं आया कोई बात नहीं, हमने मीटिंग ले ली है, ये डिस्कस हुआ था, ये ट्रैक है, we'll send in the report. Okay, but no client would say no. Okay, because उसके पैसे लगे हैं भाई. But वो नहीं आया तो we send minutes of meeting or recording of the meeting, what have we done, where is the progress. Anyone who is putting money will come again and again. यार 10 बार पूछेगा ये आपसे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने, कैसा होगा आपने घर बनाने के लिए किसी को 1 करोड़ रुपए दिए और आप फिर बोलो कि नहीं मुझे नहीं देखना क्या बनना है मेरे घर में, तुम बना दो जो मन में आता है बना दो. ऐसा हो सकता है प्रेरणा? आइडियली नहीं होता. बट अगर आप बीमार पड़ गए हो तो ऑब्वियसली आप नहीं जा पाओगे, एक स्प्रिंट पे आप नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे, आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग भेज देंगे, मीटिंग की रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आपको ब्रीफ कर देंगे क्या डिस्कशन हुआ था, क्या चीजें डिस्कस हुई. वो स्प्रिंट का पार्ट होता है विच आई विल ट्रेन यू फॉर. मैं आपको ट्रेन करूंगा स्प्रिंट का रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, हाउ टू रिकॉर्ड स्प्रिंट मीटिंग्स. ओके, विल ट्रेन यू फॉर स्प्रिंट मीटिंग कैसे रिकॉर्ड की जाती है. अगेन येट आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, सर हाउ वी चूज 1 to 4 weeks. विल सी लेटर ऑन. ठीक है, डिसाइड होता है बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरियाज, check points. Okay. Now we have daily scrum meeting here. Steps very quickly. We got an idea. Idea मिल गया. आइडिया का स्कोप डॉक्यूमेंट बन गया, मतलब 1 page डिस्क्रिप्शन. इसका प्रोजेक्ट चार्टर बनाया हमने, राइट, या एसआरएस बना दिया हमने. 13 to 14 पेज ऑफ डिस्क्रिप्शन. करेक्ट, आइडिया को और डिटेल में लिख दिया. अब इसमें हम एनालिसिस और प्लानिंग करेंगे. हम यहाँ पे बनाएंगे मॉड्यूल्स, राइट, ग्रुपिंग ऑफ ऑल द फीचर्स टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल लॉगिन है, रजिस्टर है, लॉग आउट है, ये सारे यूजर रिलेटेड एक्टिविटीज है. तो मेरा ऑब्जेक्ट या मेरी एंटिटी यहाँ पे हो जाएगा यूजर, तो यूजर मेरा एक पूरा मॉड्यूल हो जाएगा. ऐसे 30 to 40 डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं. मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है उसके लिए यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी विच विल सी. मॉड्यूल कैसे बनता है सारे स्टॉक, एक आइडिया को लेकर के हम कैसे एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं इंडस्ट्री लेवल का, ये पूरा आपको मैं सिखाऊंगा. ओके, आइडिया आया, स्कोप डॉक्यूमेंट बना, प्रोजेक्ट चार्टर बना, एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना, उसमें सारी चीजें डाला है आपने, राइट. फिर मॉड्यूल्स बन जाते हैं. मॉड्यूल्स बनाते हो मतलब ग्रुपिंग करते हैं. ऐसे नहीं होता कि आपने ये प्रोजेक्ट का सारा ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा तो एक लाइन से बनाना शुरू किया, ऐसे नहीं करते. यू ग्रुप देम टुगेदर. मॉड्यूलर किचन, हैव यू गाइस हर्ड ऑफ मॉड्यूलर किचन?
है ना. Modular kitchen versus mom keeping all the bartan in one big tub. What is the problem? Modular kitchen versus mom keeping all the bartan in one tub. If you want a spoon, it becomes difficult. कहाँ है spoon? ढूंढते बैठो. Lot of waste of time, right? So better approach is group it together. Spoons at one place, bowls at one place, grouping it together. Project may be same concept. We don't start implementing from one particular way. We group them together, makes it easy for us. So we create modules. Modularity, चार principles बताए मैंने. Modularity, layering, coupling, cohesion. You do not have idea, no problem. We'll talk about it in the upcoming session. Okay. And remember, this is not a textbook session. हम प्रैक्टिकल करेंगे. आज थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हमने, केस स्टडी कर ली. आगे इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे हम. मॉड्यूल्स बन गए. नाउ व्हाट वी डू हियर इज नाउ मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करना है. सो आई डिवाइड एवरीथिंग इनटू टास्क. यूजर में लॉगिन बनाना है, ये मेरा एक टास्क हो गया. ओके, ये मेरा एक टास्क हो गया. माई ईच टास्क इज बिटवीन 15 to 4 hours. इससे ज्यादा बड़े काम टास्क बनाते ही नहीं. कोई भी काम करना है 4 घंटे में करो सर, लेकिन कोई काम अगर इससे बड़ा हुआ तो 8 घंटे का काम हुआ तो उसको ब्रेक कर दो एंड क्रिएट सब टास्क. बट नो टास्क कैन बी मोर देन 4 hours. अगेन एक क्वेश्चन आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा. नो क्यूरियोसिटी. शुड हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन हियर. Every task can only be 15 minutes to 4 hours. No task can be more than 4 hours. If the task is more than 4 hours, you break it down into segments. उसको तोड़ दो और 4 4 घंटे में मैक्सिमम बना दो. ठीक है. Alright. Likewise, before you start the project, you have total number of hours. यहाँ क्वेश्चन ये आना चाहिए सर, 4 घंटे में ही क्यों करना है, ऐसा क्या होगा, जो कि नहीं आया. नेक्स्ट टाइम पूछना. 4 hours. So now what happens here is SRS, modules, task and subtask. नंबर ऑफ टास्क हमें पता चल जाएगा. विल वी कम टू नो नंबर ऑफ टास्क? यस और नो गाइस? क्विकली फीडबैक दे दो तो हम सेशन क्लोज कर लेंगे जल्दी से. लास्ट है ये बस. नंबर ऑफ टास्क पता चल जाएगा हमें. नंबर ऑफ टास्क आर यूजुअली 300 to 400 एवरेज ऑन एनी सॉफ्टवेयर. Okay. We also know each task will take how much time. Am I right? Yes. Am I audible, guys? We also know each task will take how much time. Am I right, guys? Do we do by this approach? Do we also know each task is gonna take how much time? So do we know the total time? Yes. I know total task. I know each task will take how much time. Predetermined before I start my project. So by the same logic, I know total number of development hours. Correct? Is it clear? I know my total working hours. I have not yet started working, but I know now कितना time लगेगा. Usually a project take 400 to 500 hours. इतना time लगता है. बड़े से बड़ा project takes 400 to 500 hours, guys. Okay, बड़े से बड़ा project. Now what I'll do here is, this would be my timeline. Start, end. Every week, how many hours I can work? 40 hours. But I am a team of 5 people. I'm a team of 5 people, right? So उतने number of hours work हो जाएगा. ये जितने भी टास्क मैं क्रिएट करता हूँ, ये टास्क मैं क्या करूंगा, एक स्प्रिंट में आई कैन ओनली डू सर्टेन नंबर ऑफ टास्क. करेक्ट. एक स्प्रिंट में मेरे पास 200 300 400 घंटा है, राइट. तो मैं उतने टास्क उस स्प्रिंट में अपने टीम मेंबर्स को असाइन कर दूंगा. नाउ दीज टास्क आर कॉल्ड एज बैकलॉग. अभी वो इसरो ने मिसाइल लॉन्च किया, राइट.
इसरो ने मिसाइल लॉन्च किया, करेक्ट? So how was the counting? Was it 1 2 3 4, or was the counting -10, -9, -8? How was the counting? Was it 1 2 3 4 10, or is what 10 9 8 7 6 5 4 2? जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना दोस्त, उल्टी काउंटिंग चलती है. So here suppose you have 400 tasks, right? 400 tasks, 400 टास्क होंगे, 800 से 900 घंटा लग जाता है मिनिमम खत्म करने के लिए. So these 400 tasks are my backlogs. So I start with -400 tasks. That is my approach. -400 tasks. So day one, suppose I started working on 21st of July. How much work I have to do? I will not say I have completed one job. I will say I am minus 390. That is my approach in Scrum. Clear? That's why it is called as backlog. Every sprint, my team can only do certain number of tasks. Maybe 20 tasks. Next 20. Next 20. अगर इस स्प्रिंट में कोई प्रॉब्लम आया, वी विल टेक केयर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. अगर इस स्प्रिंट में कोई प्रॉब्लम आया, विल टेक केयर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. ओके, राइट? एवरी स्प्रिंट वी रन एसडीएलसी. हर स्प्रिंट में मेरे पास जितने भी टास्क असाइन हुए हैं, मैं उसको वापस से एनालिसिस करूंगा, प्लानिंग करूंगा, डिजाइनिंग करूंगा, कोडिंग करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, टेस्टिंग करूंगा और डिप्लॉय कर दूंगा. दैट मीन एट द एंड ऑफ स्प्रिंट 1, will I have certain part of working software? Yes or no, guys? Will I have certain part of working software at the end of sprint 1? Yes or no? Will I have certain part of working software at the sprint 1? I will. I will. And by default, what I do here is, मेरे बहुत सारे टास्क है, मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स है. Everything comes down to module and task. By default, sprint में ना priority पे काम किया जाता है. We talk about high, medium and low priority. Everything we do, we will convert it into high, medium, low priority. सुबह उठना है, क्या क्या काम करना है, हाई प्रायोरिटी काम पहले करना है. सुबह गए ऑफिस में, क्या काम करो, कौन सा मॉड्यूल फर्स्ट स्प्रिंट में आएगा, हाउ विल बी डिसाइडेड, हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल्स डालो. हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल्स में भी 10 टास्क है, divided into high priority tasks, low priority tasks, medium priority tasks. So I will always take high priority modules and high priority tasks in my first sprint. That means these are the important modules or important features. That means at the end of sprint 1, जो basic important चीजें वो रेडी हो जाएगी और मैं क्लाइंट को इमीडिएटली फर्स्ट वीक से सॉफ्टवेयर डिलीवर करना शुरू कर दूंगा. यस, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्प्रिंट आई विल स्टार्ट गिविंग सॉफ्टवेयर टू द यूजर. आपने व्हाट्सएप यूज किया, राइट? आप देख रहे हो नया नया फीचर आ रहा है, मतलब आप यूज कर रहे हो, राइट? आप यूज कर रहे हो, चीजें चल रही है और अपडेट पीछे से आ रहा है, सॉफ्टवेयर पूरा रेडी नहीं हुआ है. दैट इज माई एजाइल स्प्रिंट. हु आर यूजिंग इट? व्हाट्सएप से लेके सारे लोग यही यूज कर रहे हैं. दैट्स हाउ दे आर डिलीवरिंग फास्ट प्रोडक्ट टू यू. So my software is partially ready on sprint number 1. Okay, ऐसे करके मैं सारे खत्म कर लेता हूँ. चेंजेस आया, सपोज मैंने प्रोजेक्ट सब डिसाइड कर लिया, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया काम, बीच में से चेंज आया, तो आप क्या बोलेंगे? नो वरीज ब्रो, मेरे हर स्प्रिंट में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइनिंग होती है, तुम चेंजेस लाओ, हम डाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम, हम डाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम. लेकिन स्प्रिंट के बीच में से नहीं डालेंगे. क्या करेंगे? आपने जो भी चेंजेस दिए, यस सर, मोस्ट वेलकम, वी विल इम्प्लीमेंट इट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. यहाँ और 10 चेंजेस आ गए, मोस्ट वेलकम सर, वी विल इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. व्हाई? बिकॉज एट एवरी स्प्रिंट वी आर डूइंग एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग. हम वैसे भी एनालिसिस करने वाले हैं, तुम कुछ नए चीजें लाओ, उसको भी एनालिसिस कर लेंगे, राइट? लेकिन थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना उस वजह से. हाँ, हो सकता है टाइम बढ़ जाए एक्स्ट्रा. हो सकता है कि मेरा डेवलपर बीमार हो गया, उसका कुछ काम छूट गया, तो नेक्स्ट स्प्रिंट में चला जाए. नेक्स्ट स्प्रिंट में कुछ नए चेंजेस आ गए, जिस वजह से टाइम बढ़ गया,
तो कुछ काम पीछे रह गया तो नेक्स्ट स्प्रिंट में चला जाएगा। ऐसे करते करते ये मेरा एंड डेट है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्प्रिंट्स विल आई टेक? कॉमन सेंस क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्प्रिंट विल आई टेक? कितने भी चेंजेस आए, कितने भी प्रॉब्लम आए, ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना एक्स्ट्रा स्प्रिंट लगेगा? टाइम एंड वर्क यार, सिंपल मैथ्स है, देयर इज नो साइंस, सिंपल मैथ्स। कितना टाइम लगेगा एक्स्ट्रा? ऐसा हो सकता है क्या कि सारे ही स्प्रिंट में कुछ भी काम नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है क्या? हम चेक पॉइंट्स भी रख रहे हैं इतने सारे, राइट? वी आर कीपिंग लॉट ऑफ चेक पॉइंट्स आल्सो। बहुत बहुत ज्यादा होता है तो एक या दो स्प्रिंट आगे जाते हैं, अगर बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चीजेस हैं। सो डू वी पुश द टाइमलाइन लिटिल आगे? नो, वी डोंट। हमें ना मिड ऑफ द वे में पता चल जाता है कि वी आर रनिंग 1 or 2 sprints बिहाइंड, तो हम क्या करते हैं? एंड व्हाट डू वी डू? वी कॉल यू ऑन सैटरडे एंड संडेज एंड आस्क यू टू कवर अप दोज एक्स्ट्रा स्प्रिंट्स। क्लियर? लेकिन जो एंड डेट डिसाइड होता है ना, उसे एक दिन भी आगे नहीं जाते। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? स्मार्ट वे ऑफ डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट। सो स्क्रम मास्टर हियर इज रिस्पॉन्सिबल, नंबर वन, डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है। इस मीटिंग में आपको बताऊंगा मैं, इस मीटिंग में हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं। कल क्या किया, आज क्या करने वाले हो, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? ये मीटिंग डेली होती है। तो आफ्टर 1 month यू कैन नॉट से सर ये प्रॉब्लम था, सर वो प्रॉब्लम था, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बिकॉज वी आर आस्किंग यू डेली। Plus, daily you have to tell what you are doing, what you have done. So we have a complete track of what's happening, and every problem gets solved on a daily basis. और sprint review meeting जो होती है after 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks or 1 week, इसमें हम client को भी invite कर लेते हैं और एक पूरा check कर लेते हैं सब बराबर है ना, perfect. By all of these methodology, we are ensuring good quality, we are ensuring less time, और क्योंकि एक अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन रहा है, चेक पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, तो कोई भी एरर्स, बग्स या प्रॉब्लम नहीं आते, तो कॉस्ट भी सही बचता है, टीम कम लगती है, इसमें बहुत डिसिप्लिन वे में काम होता है, एंड कोई भी चेंज तुम लेके आओ, वी विल इंक्लूड इट, राइट? वी विल इंक्लूड इट। ओके, सो दिस इज द स्टेप दैट इज परफॉर्म, and this is done by Scrum Master. Scrum Master is responsible for maintaining this type of SDLC टीम। स्क्रम मास्टर मीटिंग बुलाता है, स्क्रम मास्टर डेली रिपोर्ट्स बनाता है, स्क्रम मास्टर स्क्रम शीट बनाता है। देयर आर मेनी रिपोर्ट्स, जैसे कि बर्न डाउन चार्ट होता है, बर्न अप चार्ट होता है। तो बर्न डाउन चार्ट बनता है, एक सिंपल ग्राफ बनता है कि स्टार्टिंग में 400 टास्क थे हमारे पास, हम धीरे धीरे कितने खत्म किया, तो हमारा उल्टा स्केल जाता है। ये चार्ट और ये रिपोर्ट भी स्क्रम मास्टर बनाता है। डेली स्टैंड अप मीटिंग्स भी स्क्रम मास्टर लेता है, दैट मींस स्क्रम मास्टर हैव exact idea who is doing what and how they are performing, whether you are performing all the principles of software engineering, advanced software development methodology and SDLC or not. This is monitored, mentored by scrum master. Scrum master brings you into discipline. Scrum master also maintains the sprint शीट, जहाँ पे क्या टास्क और कौन क्या काम करेगा, वो पूरा गाइडलाइंस आपको रहता है। आपका टास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी स्क्रम मास्टर का रहता है, स्टैंड अप मीटिंग्स लेने का काम भी स्क्रम मास्टर का रहता है, इसकी रिपोर्ट भी स्क्रम मास्टर बनाता है। और स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग जो होती है 2 वीक्स के बाद या 3 मीटिंग के बाद या 4 वीक्स के बाद, उसमें हम चेक करते हैं कि हमारा SRS के हिसाब से चीजें बन रही है नहीं बन रही है, so that we can produce quality software in less time and as per the requirement of the client, right? आज जो एंड डेट डिसाइड होगा उसी में डिलीवर करेंगे, जो बात हुई थी वो डिलीवर होगा, नो चेंजेस in terms of my quality. Then that is all about Scrum. So if you meet me next, we will talk about how to do stand-up meetings, Scrum Master का role and responsibility in detail, SDLC को कैसे डिटेल में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिव्यू मीटिंग्स कैसे होती है, स्प्रिंट डॉक्यूमेंट्स कैसे बनता है,
मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल्स को हम लोग शेयर कैसे करते हैं, असाइन कैसे करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे डेवलपर को तो हम ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं. And at the same time, there are many project management tools like Jira, Slack, and many other softwares which are used by the industry to implement this. We will see practical implementations of those tools also, right? Out of which Jira and Slack are one of the most important things which we'll implement. So we'll see process, we'll see technology, we'll see case studies, and we will also see live projects and understand this in detail. Thank you so much, guys. Any doubts? Any doubts? Shall we end this session? Yeah, shall we end this session? Yeah. Okay. Yes, sir. I'm putting up a Google form in the chat box. This form is your willingness. I'm going to conduct 30 hours of Scrum Master training program along with certification. At the end, you will be receiving certification also. Okay. Where today जो हमने overview लिया इसको implement करना तो सीखा नहीं ना आपने, implement करना सीखेंगे. And we'll get into the depth of the scientific laws and principles along with the tools and technology. Jira, Kanban, स्लैक, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एक पूरा प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, आइडिया टू अ प्रोडक्ट बाय फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसडीएलसी, एजाइल, स्क्रम, ये सबको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, we'll do it. It's gonna be a great journey of 30 hours. Those who are absolutely interested should sign up for this. Those who are not interested, do not have time, or those who have all the answers and you don't need my help, don't sign it up. There's no problem. But if you sign it up, be ready to give some time, be ready for some additional exercises, be ready to learn certain new things. And most important of all is a good attitude is what I would expect from you. जब हमने सॉफ्ट स्किल्स में बात की थी, राइट, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ आप आओ, आपको बहुत सारी चीज़ें हम हेल्प करेंगे और आपको इंडस्ट्री में एक ग्रेट लेवल, सी आप एक लेवल पे अभी खुद से जा सकते हो, बट विद करेक्ट मेंटोरशिप एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग दिस लेवल कैन गो टू दिस लेवल, राइट. 2-3 लाख की जॉब आपको मिल जाएगी. मैं आपको बताता हूँ 10 लाख की जॉब कैसे लेती है, जिसके लिए तुम्हें 10 साल लगेगा बाई योर करंट अप्रोच, राइट. दैट आई कैन ट्रेन यू फॉर. No amount of YouTube, no amount of Instagram, no amount of any platform may help you. Secondly, I'm rank one trainer for Ministry of IT and Informatics CDAC. I'm rank one trainer for Upgrad. I'm rank one trainer for Upgrad Campus. I'm rank one trainer for Upgrad for Business. I'm training Accenture. I'm training Infosys. I'm training 40,000 employees of TCS every year. I'm training Godrej. I'm training Inspire Enterprises, world biggest cybersecurity companies. I'm training their CEO. I'm training their VP. I'm training their employees. I'm training 10-year employees. I'm training 5-year employees. I'm training 3-year employees. I'm training my first year employee. Everybody, right? So I can help you in many ways, provided you come with time, you come with good attitude, you play by the rules, you are ready for mentorship and guidance. That means there are certain rules of engagement. जब आप मेंटर और ट्रेनिंग में आओगे तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करोगे, ठीक है. वी डू नॉट वांट एनी कस्टमर बिहेवियर. यू नो व्हाट इज कस्टमर बिहेवियर. मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. यू हैव टू कम विद हम्बल बिहेवियर, राइट. यस सर, ओके सर, वी विल डू इट. दैट मींस इफ आई टेल यू ये करना है, ऐसे करना है, आप करोगे. आपको कोई भी चैलेंजेस आएगा, डिफिकल्टीज आएगा, आई विल हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल. ओके, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, but with a promise that I'll meet you up more often. Right? KC College is very special to me. Geeta ma'am is very special to me. Charlie ma'am is very special to me. Right? And they have trained me. They have helped me to reach where I have reached. So I always make sure कि कभी कभी आप लोगों के पास आऊँ और ये जो सर्कल है वो करूँ मैं. ठीक है. मुझे गीता मैम ने, शालिनी मैम ने, वागला मैम ने, इन लोगों ने मुझे ट्रेन किया है जब मैं केसी कॉलेज में था. एंड समहाउ आई हैव रीच्ड हियर. तो मैं वही कोशिश करता हूँ जो मेरे टीचर्स ने किया है, राइट. मेरे टीचर्स ने डांटा है, मारा है, फटकारा है,
मुझे सिखाया है समझा है तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ. So I also trying to do the same thing. Now I have learned a lot of things. I'm doing good with my life. So I want to come back to you and I want to give something to you which will be very helpful. I know मोस्टली ऑनलाइन ही रहेगा दोस्त. ठीक है, सॉरी प्रेरणा, मोस्टली ऑनलाइन ही रहेगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू कंपनीज एंड ऑल. मोस्टली ऑनलाइन रहेगा बट if health permits, time permits, I'll come and meet you. Okay, if health permits, time permits, I'll come and meet you. But mostly we'll keep it online. Done? Because it's just convenient for you and me. Done, guys? हाँ, चलो, take care, bye bye. See you tomorrow. नहीं tomorrow नहीं, we'll see you next जब हम मिलेंगे we will implement Scrum. Okay, practical training होगा 30 hours का A to Z implement करेंगे. The model would be 80-20 model, 80% practical, 20% of required knowledge or theoretical part of it. That would be the 80-20 model. Okay, bye bye guys, take care. I'll see you again. Okay, bye ma'am, shall we close the session? Thank you, we'll close it.